Hello students, hope you all are doing good. So here I Gargi Kamar, Assistant Professor BBA in Saint Andrews Institute of Technology and Management. So here I'm back with an online lecture series on HRM subject. So let's start with lecture. See guys, in our last lecture we discussed the strategic human resource management. And in today's lecture we are going to discuss HR outsourcing topic, in which we will discuss BPO and EPO. Okay, so let's start with lecture. Let me show you the slide. Yes. So first of all, question arises that what is human resource outsourcing? What do you understand by human resource outsourcing? So basically, human resource outsourcing involves the hiring companies to manage personnel functions, including the administration of health, benefits, retirement plans, and workers' compensation insurance. It is also include hiring, training, and legal expertise. So when a company appoints another company to their work, their personal functions like hiring, like for training, and for administration of health benefits and retirement plans. For these works, if a company appoints another company to do all these works, or to take care all these works, then in that case, this process will be known as human resource outsourcing. So, have you ever heard about the consultants? Consultants के बारे में जैसे आपने सुना होगा, consultants का काम क्या होता है? किसी कंपनी के लिए हायरिंग करना. कंपनी को अगर कंपनी को नीड है किसी वर्कर की या किसी एम्प्लॉय की, तो वो किसको बताएंगे? कंसल्टेंट कंपनी को बताएंगे जो उस कंपनी की कंसल्टेंट कंपनी होगी. ओके, so company will appoint a consulting company and will not do the work of appointment in their company. खुद की कंपनी में, खुद की ओन कंपनी में वो रिक्रूटमेंट का काम नहीं करेंगे. रिक्रूटमेंट का काम किसका होगा? काउंसलर्स, कंसल्टेंट्स का होगा. कंसल्टेंट्स का होगा. जो भी उसकी कंसल्टेंट कंपनी होगी, वो उस कंपनी के लिए अपॉइंट करके, आपके पास बहुत सारे कंसल्टेंट्स का कॉल आता होगा जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस कंसल्टेंट को अपने रिक्रूटमेंट का काम देना इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग. तो ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग बेसिकली कंपनी क्या करती है? अपने जो भी पर्सनल वर्क है, अपने जो भी ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड जो वर्क है, लाइक उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, वो हेल्थ बेनिफिट देना है, तो उसके लिए देखिए जिस भी कंपनी में अगर आपने कभी देखा हो, वो हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है, मेडिकल मिलता है, या ईएसआई मिलता है, या कोई इंश्योरेंस अगर मिलता है, तो वो बाहर की कोई कंपनी होती है. कंपनी खुद के नाम से तो वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है. बाहर की, जैसे एलआईसी से बात करिए, एलआईसी से आपको मेडिकल प्रोवाइड करवाया, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया. तो ऑल दीज वर्क विल बी नोन एज ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग. तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग में कंपनी क्या करेगी? अपने कुछ कामों के लिए बाहर किसी कंपनी को अगर अपॉइंट करती है उन कामों को करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग. ओके, the top two reasons for outsourcing are the benefits of cost and time efficiency. So आपको आउटसोर्सिंग से बेनिफिट क्या होगा? तो और जो बेनिफिट होगा आपका आउटसोर्सिंग, दैट विल बी यू विल सेव द कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी. आपकी कॉस्ट बचेगी एज वेल एज आपका टाइम भी बचेगा. ओके, आप क्या करेंगे? जैसे किसी कंसल्टेंट को आपने रखा है, किसी इंश्योरेंस कंपनी को आपने अपॉइंट करा हुआ है, जो आपके जितने भी एम्प्लॉइज होंगे उनकी इंश्योरेंस करेंगे, उनके इंश्योरेंस का टेक केयर करेंगे. ओके, उनके इंश्योरेंस को मैनेज करेगी. तो उस कंपनी को जो भी उसका फिक्स आपने जो भी पेमेंट आपने जो डिसाइड हुआ है, जो भी जितना भी परसेंट आपका डिसाइड हुआ, वो परसेंट उसको दे दोगे. इससे आपका क्या होगा? आप सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इंश्योरेंस कंपनी. ओके, तो इसमें आपका क्या होगा? कंपनी का क्या फायदा हुआ? एक तो कंपनी के टाइम बचा, और कहीं ना कहीं वो अपने कॉस्ट को भी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली अपने कॉस्ट को भी वो कम कर देती. अगर कंपनी खुद से ही इंश्योरेंस का सेटअप करती, फ्रेंचाइजी लेती और फिर अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवाती, तो इट विल टेक अ लॉट कॉस्ट. ओके, तो इससे अच्छा कंपनी ने क्या किया कि इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज होंगे उनका आपको इंश्योरेंस करना है, व्हाट विल बी योर फीस. ओके, फीस उनसे पूछ लेंगे एंड दे विल पे फीस, दैट फीस टू इंश्योरेंस कंपनी. ओके, so these are the this is the first reason, or you can say these are the two topics. Sorry, this is top two reasons, that is cost and time efficiency. Okay? These efficiencies are readily the opportunity cost of business owner and manager who lose the time and money focusing on HR tasks, when these resources can be spent on what must be done to grow their business. So इससे क्या होगा? देखिए, आपकी अपॉर्चुनिटी
कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दीज एफिशिएंसी, सो सी इफ मैनेजर्स और द अदर एम्प्लॉइज, अगर आप उनको, अगर आप आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे और ये सब काम आपके मैनेजर्स करेंगे, ओनर्स करेंगे, ये सब काम जो आपने दूसरी कंपनी को दिया, सपोज रिक्रूटमेंट का काम आपने किसी कंसल्टेंट को दे दिया, ओके, नाउ मैनेजर्स आपके रिक्रूटमेंट से फ्री हो गए, ओके, सिर्फ एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताए कि कितने एम्प्लॉइज चाहिए और वहाँ मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, वो कंसल्टेंट इंटरव्यूज लेंगे, कंसल्टेंट की वैकेंसी डिक्लेयर करेंगे, वैकेंसी पब्लिश करेंगे, and then they will call the they can call the applicants and will call these applicants and will take the interviews of these applicants, और जो भी प्रॉपर जिसका भी सिलेक्शन होगा उसको सेलेक्ट करके एंड में कंपनी में भेज देंगे। तो मैनेजर का देखिए कितना टाइम और कितनी कॉस्ट, कितना टाइम सेव हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी फायदा होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स कि मैनेजर ने जो ये टाइम इन सब कामों में ना लगा के किस में लगाया, किसी और चीज में लगाया, तो उससे जो फायदा होता है आपको, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। सो अपॉर्चुनिटी, आपको ये, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, मैनेजर्स को आप रिक्रूटमेंट में एंगेज करते थे तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और मैनेजर को बहुत सारा टाइम सिर्फ रिक्रूटमेंट में ही वेस्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू देने में डॉल, ओके। अब आपने अगर कंसल्टेंट रख दिया है, वो उनके इंटरव्यू लिए, तो मैनेजर्स का टाइम सेव हो गया। मैनेजर्स उनको क्या करेंगे, उस टाइम को कहाँ इंगेज करेंगे, कहाँ स्पेंड करेंगे, ऑन द ग्रो ऑफ देयर बिजनेसेस, कि कैसे हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है उसके बारे में सोचेंगे, स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, इन सब कामों में मैनेजर्स इंगेज रहेंगे, ओके। बट अगर रिक्रूटमेंट का काम भी अगर आपने दे दिया होता है मैनेजर्स को, तो मैनेजर्स कंपनीज की ग्रोथ पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, उसके लिए स्ट्रेटेजीज नहीं बना पाते, बिकॉज they stuck with the all these recruitment formalities, okay। managers कितने stuck हो जाते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में ही स्टक होकर रह जाते हैं, और वो और कुछ काम नहीं करते। तो जो भी इनका टाइम बचा, उनको वो किस जगह एंगेज करना है जिससे कंपनी का ग्रो होगा, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो समवेयर आउटसोर्सिंग से आपको क्या मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग से आपको क्या मिलता है, आपको कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी बेनिफिट मिलता है। कि अपॉर्चुनिटी बेनिफिट मतलब क्या, अगर उन्होंने वहां टाइम नहीं लगाया तो ये और लगाया, तो उससे जो भी बेनिफिट होगा, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग। तो ह्यूमन रिसोर्सेज से जितने भी रिलेटेड काम है, अगर आप बाहर की किसी कंपनी को अपॉइंट कर लेते हैं वो काम के लिए, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग। सो first outsourcing is knowledge process outsourcing. What is knowledge process outsourcing? There's two type of outsourcing, that is KPO and BPO. Business process outsourcing and knowledge process outsourcing. So what is it, let's see. What is knowledge process outsourcing? It involves outsourcing at core functions which may or may not give cost benefit to the parent company but helps in value addition. So when you are involving an outsourcing of core functions, if you are doing your core functions, you are outsourcing your core business functions, then that kind of outsourcing will be known as KPO. So अगर आप अपने core functions के लिए, अपने business की core functions के लिए outsourcing कर रहे हैं, तो that is called knowledge process outsourcing. Now the benefit of cost may not be there, but it helps in the value addition. इस टाइप के जो वर्क होते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के जो भी वर्क होते हैं, उससे आपको डायरेक्ट कॉस्ट का कोई बेनिफिट हो या ना हो, कॉस्ट का कोई बेनिफिट हो ना हो, बट आपका वैल्यू एडिशन जरूर होता है। द प्रोसेसेस व्हिच आर आउटसोर्स्ड टू केपीओज आर यूजुअली मोर स्पेशलाइज्ड एंड नॉलेज बेस्ड। सो जो भी आप केपीओ के थ्रू जो भी प्रोसेस का आउटसोर्सिंग करेंगे, दैट आउटसोर्सिंग मींस वेरी स्पेशलाइज्ड एंड नॉलेज पर्सन, ओके। तो केपीओ किसके बेसिस पे होगा, स्पेशलाइजेशन और नॉलेज के बेसिस पे। Let's see the detail KPO. When difficult high-level tasks get outsourced by the company to a vendor, will be known as KPO. जब आप high level का कोई task outsource करेंगे, that is called KPO. So the activities which the company will outsource are core activities. तो KPO में आपको ध्यान देना है कि जो activities आप outsource करने जा रहे हैं, that must be core activities. और इन केपीओ के थ्रू आपको डायरेक्ट कॉस्ट का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, बट आपकी
require skills, technical knowledge and expertise. एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, केपीओ में आपको स्किल पर्सन चाहिए, टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज चाहिए. तो company outsources these tasks to another company or subsidiary company located in the same country or sometimes offshore or for post purposes. So आपकी जो knowledge process जिसको भी जिस भी company को आप अपना outsource कर रहे हैं, अपनी activities outsource कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि आपकी सेम कंट्री में. It may be in another company also, and at the same time it may be situated in offshore areas for the cost benefits. Okay, so this is known as KPO. So KPO is the process of outsourcing in which core functions are outsourced and in which the person or the company requires skills, technical knowledge, and needs some expertise. And through the KPO, it may not be possible that you get benefit of cost, but definitely you will get, or the company will get the value addition at the same time. Okay, so KPO में जरूरी नहीं कि आपको cost benefit हो, but definitely you will receive benefit from value addition. Okay, value addition आपका definitely होगा. Now there are some kind of KPO services. There are some example of types of KPO services like financial consultants, research and development, business operations, technical analysis, investment, legal, medical, data analysis and interpretation. So देखिए ये जो भी आपकी वर्क है, like financial consultation है, आपने कोई financial consultation रखा कि हमको क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए in terms of finance, और हमको क्या क्या हमारी एक्टिविटीज होनी चाहिए, कैसे हम टैक्स को बचा सकते हैं, these all these known as financial consultancy. Any research and development, if you are doing, if you want to do the research in market, or you want to apply any development activities, in that case if you appoint any other company for this research and development work, then that will be known as KPO. Okay, so in सब में देखिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट को आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए R&D में आपको एक स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस की किसी ऑपरेशंस के लिए आपको स्किल पर्सन की, टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा पर्सन चाहिए आपको उसको टेक्निकल नॉलेज हो, इन्वेस्टमेंट में आपको ऐसा कुछ चाहिए जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, लीगल में आपको कोई एडवोकेट चाहिए, कोई कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, प्रैक्टिकल में आपको क्या चाहिए, कोई MBBS या MD चाहिए, और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में भी आपको स्किल्ड और वेल नॉलेज और एक्सपर्टीज चाहिए. Okay, so these are some kind of KPO which you take in consideration. Okay, so these are some types of KPO services. Now let me tell you one thing I have forgot to discuss, needs of HR outsourcing. So HR outsourcing के need क्या होते हैं, just forget to discuss this topic. So let's first discuss this. हम KPO पे फिर से जाएंगे, लेकिन एक बार ये needs of HR outsourcing देखें. तो HR outsourcing की need क्या होती है हमको? The following are the some of needs of HR outsourcing, like enabling businesses to focus on core operations, delivering cost saving whether direct or indirect, helping to create a stable cost effective operation rate. So first is enabling business to focus on core operations. So see, अगर आप आउटसोर्सिंग कर देंगे, जो ऐसा वर्क है जो आपको जो जरूरी नहीं है कि आपके किसी का हो पूरा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो अगर आप अपनी कुछ एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर देंगे, किसी और कंपनी को दे देंगे, तो आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे इस पे, अपने कोर फंक्शंस पे, जो आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो फंक्शंस नीडेड, you can focus on that functions. Okay, the next is delivering cost saving whether direct or indirect. You will receive, or you will save your cost whether directly or indirectly. Directly, indirect किसी भी तरीके से आपको cost की saving definitely होगी. Then helping to create stable cost effective operating platform. So you can create, through outsourcing you can create a stable or cost effective operation platform. So आपके जो भी ऑपरेशन है कंपनी में, वो cost effective होकर स्टेबल तरीके से, स्टेबल वे आप उसका क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द आउटसोर्सिंग. ट्रांसफरिंग फोकस फ्रॉम इंटरनल प्रोसेस टू अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल. तो देखिए मैनेजर्स आपकी क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं जो कि एडवाइजर्स होते हैं, या कोई भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आपको कोई भी पर्सन है, वो क्या करते हैं, उनका काम सिर्फ इंटरनल प्रोसेस पे ही फंस के रह जाता है, जो कंपनी के अंदर के काम है सिर्फ उन्हीं में फंस के वो लोग रह जाते हैं और अपना ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर पाते इन द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल.
आउटसोर्स कर रहे हैं किसी और कंपनी को दे देंगे, तो मैनेजर्स के पास सफिशिएंट टाइम लगेगा कंपनी की अचीवमेंट और गोल्स के ऊपर ध्यान देने के लिए. ओके, then realizing investment in HR transforming and IT system. Realizing investment in HR transformation and IT system. So, see, जब आप किसी भारतीय कंपनी को HR मैनेजमेंट का काम दे देंगे आपने, तो उससे क्या होगा, वो टाइम टू टाइम उनका लाइक टाइम टू टाइम उनका ध्यान रखेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट रखेंगे, उनकी पॉलिसी लाइक जैसे कि कोई आपने मेडिकल पॉलिसी करवा रखी कंपनी में, तो पॉलिसी के एक्सपायर होने के ध्यान रखेंगे, उनको नोटिस देंगे, जो भी व्हाटसोएवर. तो इन दैट केस जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एचआर में, एचआर तो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आईटी सिस्टम्स आएंगे. ओके, then next is ensuring compliances with legal regulatory and best practices and the requirement is ensuring compliances with legal regulatory and best practices. So see, if you outsource your legal works, then in that case आपको आप इस चीज के लिए इंश्योर रहेंगे कि आपके सारे लीगल कंप्लायंसेस फुलफिल हो रही है. अगर मैनेजर्स को बहुत सारे काम होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स लाइक किसी डॉक्यूमेंट को रिन्यू करवाना है, आपके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना है, तो कहीं ना कहीं वो मैनेजर के माइंड से स्किप हो जाएगा. लेकिन अगर आपने ये आउटसोर्स कर रखा है, आपने लीगल वर्क को आउटसोर्स कर रखा है, किसी कंपनी सेक्रेटरी को दे रखा है, किसी और कंपनी को दे रखा है जिसमें कंपनी सेक्रेटरी होते हैं बहुत सारे, तो वो टाइम टू टाइम आपका ध्यान रखिए कब आपका कोई डॉक्यूमेंट आउटडेटेड हो रहा है, कब उसका रिन्यूअल कराना है, कब नया सर्टिफिकेट लेना है, ऑल दीज. ओके, सो आउटसोर्सिंग इंश्योर्स योर कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस आल्सो. ट्रांसफरिंग रिस्क एंड लायबिलिटी टू द पीपल फॉर पीपल इशू. तो इससे क्या होता है, अब जब भी आप आउटसोर्स करते हैं किसी भी एक्टिविटीज को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटीज को, इन दैट केस जो भी पीपल, जो भी लोगों के इश्यूज होने वाले, वो एक तरीके से उसके रिस्क और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं जिस कंपनी को आपने अपनी एक्टिविटीज आउटसोर्स कर दी. सो समवेयर आप किस समवेयर you the outsourcing protects you from risk and liability for public issues. Okay, so these are some means for the outsourcing. Okay, now we were discussing KPO, na? And we have already discussed what is KPO and the types of KPO we have discussed. Now we will see various advantages of KPO. KPO से क्या क्या advantages आपको हो सकती है. So first advantage of KPO is cost effectiveness. One of the biggest advantages of KPO is obviously to cost advantage. The company does not have to set up any infrastructure or bear any operational or running costs, and it gets effective expertise service at the fraction of the cost. So cost effectiveness आपका कैसे होगा? इसके थ्रू KPO के थ्रू आप क्या करेंगे? आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है. लाइक अगर आप कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट अगर आप खुद अपॉइंट करते हैं, एक एम्प्लॉई आपके यहाँ अपॉइंट करते हैं आप, तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए सेपरेट आपको ऑफिस भी बनाना पड़ेगा और फाइनेंशियल वर्क से रिलेटेड पूरा एक डिपार्टमेंट आपको बनाना पड़ेगा. तो अगर आप इनको आउटसोर्स कर देते हैं सर्विसेज को, लाइक जैसे आपने कंसल्टेंट को अपने रिक्रूटमेंट फैसिलिटी, रिक्रूटमेंट का सारा काम कंसल्टेंट को दे रखा है. इफ यू डोंट हैव एनी कंसल्टेंट, देन you have to make or you have to build a separate department for the HR. ओके, तो रिक्रूटमेंट के लिए आपको एक सेपरेट डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा, स्पेस लेना पड़ेगा जहाँ पर इंटरव्यूज कंडक्ट करवा सके, जहाँ वेरियस जो भी आपके राउंड्स हैं वो हो सके. तो ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट को कम करता है, इसकी वजह से आपकी कॉस्ट भी कम होती है और ऑपरेशनल और रनिंग कॉस्ट भी आपकी नहीं लगती. उस डिपार्टमेंट को अगर आप सेपरेट डिपार्टमेंट को बनाएंगे रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसकी ऑपरेशनल और रनिंग कॉस्ट भी होगी, उसको रन करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी. एट द सेम टाइम इफ यू गिव योर recruitment work to another company or to outside the company, then in that case you are not required to occur any running cost for that department, or you are not need to establish or set up a new department or a separate department, and like this you will not face any running cost of that department. So like this the KPO is cost effective. Second is access to best talent. KPO के थ्रू आपका क्या होता है, KPO कंपनी कौन सी कंपनी होती है जहाँ पे एक्सपर्टीज उस पर्टिकुलर वर्क को लेती है. ओके, अगर हम बात करें कि एक फाइनेंशियल कंसल्टेशन की एक कंपनी है, तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, जितने भी कंसल्टेंट्स होंगे, दे आर वेल क्वालिफाइड, वेल स्किल्ड इन एक्सपर्टीज एज वेल. So KPO के थ्रू आपको KPO provides the company with the best, most knowledgeable and skilled professionals available in the global talent pool. And if the KPO is in a developing country like India or Philippines,
एजुकेटेड या लेस स्किल्ड पर्सन के थ्रू हो सकती है, बट KPO will always strive to give you most knowledgeable person or will recruit the most knowledgeable person and skilled professional. तो KPO के थ्रू आपको जो भी एडवाइस के लिए ये जो भी वर्क होगा वो मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन और स्किल्ड प्रोफेशनल के थ्रू होगा. तो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ द KPO. द नेक्स्ट इज फोकस. सो फोकस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर आप अपने कुछ वर्क्स KPO को या किसी आउटसोर्स कर देंगे, किसी बाहर की कंपनी को दे देंगे, तो यू कैन फोकस ऑन योर कोर वर्क्स. आप अपने दूसरे कोर वर्क्स लाइक कैसे एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए, कैसे ग्रो करें कंपनी को, क्या क्या पॉलिसीज बनाए कंपनी को ग्रो करने की, तो इन सब चीजों पे आप फोकस कर पाएंगे. कंपनी की ग्रो पे, बिजनेस ग्रो करने पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे. इफ यू गिव योर एक्सेस वर्क टू एनी अनदर कंपनी, यू आउटसोर्स योर सम ऑफ फंक्शंस टू एनी अनदर कंपनी आउटसाइड द कंपनी, देन you can easily focus on your achievements of your goals or your growth. Okay. The next is best utilization of resources. If the company outsources the process that is not at the core of their business strategy, it can use the resources saved in better places. Say a company outsources supply chain management, then the resources it saves on this can be utilized to streamline the manufacturing process, R&D activities, and better marketing activities, etc. So see, अगर आपने कुछ resources को कुछ कामों में नहीं लगाया, जैसे आप इसमें एक बात करी गई सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो आपने अपनी सप्लाई चेन किसी और को दे दी. सेल्समैन जो आपने रखे हुए थे, आपने सेल्समैन रखना पड़ता है. सप्लाई चेन आपका खुद का होता है, तो यू हैव टू अपॉइंट एनी सेल्स पर्सन. ओके. तो उन सेल्स पर्सन को या उस सप्लाई चेन में दे मे बी एनी कंसल्टेंट सॉरी काउंसलर्स आल्सो. तो कोई काउंसलर्स भी हो सकते हैं, सुपरवाइजर्स भी हो सकते हैं जो सेल्समैन का या सेल्स पर्सन का सुपरवाइज करके. बहुत सारे ऐसे वर्क होंगे, ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जो दैट यू हैव टू अपॉइंट. तो उन लोगों को आप वहां एंगेज ना करके उन लोगों को फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी और जगह यूज कर सकते हैं. ओके. तो दैट आउटसोर्सिंग गिव्स यू, KPO गिव्स यू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज. तो आप अपने